Hello, हेलो। यस सर। आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। कल के लेक्चर के बारे में आपको कोई चीज पूछनी है? ठीक है फिर आप मुझे बताइए, क्या मैंने आपको बताया व्हाट आर एफ सिग्मा एंड जी डेल्टा सेट्स? नो सर। ओके, आप इसे देखिए। कंसिडर a countable collection. This collection, say G sub n, where n running from n is running from 1 to infinity, of open sets. That means I am assuming that each Gn is an open set. ठीक, so I just want you to consider accountably infinite collection of open sets. और मान लीजिए आप ये एक metric space में कर रहे हैं, in a metric space xd. So, अगर आप इसे देखेंगे, if you see O equal, then अगर आप O लेंगे, and if you take O to be the union of these Gn's, each Gn is open, and we know that arbitrary union of open sets is open. So in particular, countable union is also open. So therefore, O is open. Then O equal to this is open. So अगर आप union लेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं है. It's open. Now what the question is, अगर आप instead of union, if we take the intersection, Then intersection is open. on the other hand, if you take G equal intersection n runs from 1 to infinity Gn, It may be or may not be open. it's not necessarily open. Exactly, ये open हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. So it need not be open. ठीक, इस चीज को किसी चीज से लेबल करिएगा स्टार. Similarly, अगर आप instead of अभी मैंने ली थी countable collection of open sets. Now instead of open sets, let's take a countable collection of closed sets. Similarly, if fn n running from 1 to infinity is a countable collection of closed sets. Now instead of open, मैं अभी closed sets ले रहा हूँ. ऊपर हमने open लिया था, अब मैं closed ले रहा हूँ. Again in metric space xd, then अगर आप u लेंगे equal, not u, कुछ और लीजिए, u
let's take V. If you take V to be equal the intersection of these closure sets n running from 1 to infinity Fn, we know that arbitrary intersection of closed sets is closed. So in particular, countable intersection will also be closed. So therefore this V is closed. ठीक? However, अगर आप इसे लेंगे instead of the intersection, if you take the union, however, if you take the union and running from 1 to infinity Fn, that means if we take a countable union of closed sets, and let's call the union as F, then this F is not necessarily closed, because only a finite union, in general, a finite union of closed sets is closed. Arbitrary union के बारे में आप in general कुछ भी नहीं कह सकते. Arbitrary union of closed sets. So this is not necessarily closed. यहाँ एक तो हम ये देख रहे हैं कि that if you take a countable intersection of open sets, then the resulting set it's not necessarily open. Similarly, a countable union of closed sets is not necessarily closed. तो आप ये इनके बारे में नहीं कह सकते whether they are open or closed. आप नहीं कह सकते कि G is open. Similarly, you cannot say that F is closed because it need not be closed. Similarly, this G it need not be open. ठीक? But nevertheless, these sets they are of great importance. मतलब इस तरह के sets. आप इस G को देखिए इसमें क्या खूबी है. G में ये खूबी है कि that it can be written as a countable intersection of open sets. इसी तरह से इस F में क्या प्रॉपर्टी है, इसमें प्रॉपर्टी है कि that it can be written as a countable union of closed sets. Although आप open और closedness के बारे में कोई चीज certainty के साथ नहीं कह सकते because in general ये कोई चीज follow नहीं करते हैं. मतलब F need not be closed, G need not be open. ठीक? But still they are of importance, these sets. मतलब इस तरह के जो sets होते हैं, sets which can be written as countable intersection of open sets, and those sets which can be written as countable union of closed sets. F जिस तरह से F को हम लिखते हैं ना as countable union of closed sets, और G को आप लिख रहे हैं as countable intersection of open sets. These sets are of importance. For this reason ये वाले जो sets है ना, इनके लिए भी एक नाम रखा गया है इसमें analysis में. These sets which can be written as countable intersection of open sets are called G delta sets. इस तरह के sets को हम कहते हैं G delta sets. इसी तरह से ये वाले जो sets हैं which can be written as countable union of closed sets, ऐसे sets को कहा जाता है F sigma sets. So this F it's an F sigma set. F sigma जो symbol ये एक symbol है. इसी तरह से ये जो G delta है ना it's a symbol. I will formalize this now. अब इसको note करिए as a definition. F sigma sets. A set F is said to be an F sigma set if and only if F can be written as a countable union
of closed sets. This is what we mean by an F sigma set. Similarly, G delta sets. Definition is this: a set G is said to be a G delta set if and only if this G can be written as only if G can be written as a countable intersection of open sets. intersection of open sets. अब आप एक remark लिखिए. There is a connection between a G delta set and an F sigma set. मतलब है G delta और F sigma sets में एक relationship भी होती है और उसी चीज को मैं यहाँ illustrate करने जा रहा हूँ. इसको as a remark आप note करिए. Suppose F is an F sigma set. Then फिर क्या होगा? Then you must be able to write this F as a countable union of closed sets. That means 0. Then F will be equal to this, where Fn's are closed. Full stop. Therefore, अगर आप इसके complement को देखेंगे आप, this is F. What will be F complement? F complement will be union and running from 1 to infinity Fn whole complement. And this will be further equaled by de Morgan's law. This will be equal intersection and running from 1 to infinity Fn complement. Now यहाँ देखिए Fn's they are closed. So what will be Fn complement? This will be open. So therefore this is a intersection, a countable intersection. So this is a countable intersection of open sets. So therefore the set जो इस तरह से आपको मिलेगा, it must be a G delta set. So that means F complement is a G delta set. Hence F complement is a G delta set. तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर F sigma set है तो इसका जो complement है it must be a G delta set, and the converse is also true. अब वो भी आप इजीली यहीं से देख सकते हैं. एक्चुअली दिस इज ट्रू. अब मैं इसका प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, ये आपके लिए मैं एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ. इसका जो प्रूफ है, बट विल रिकॉर्ड दिस एज अ थियरम. A set is an F sigma set if and only if its complement is a G delta set. ठीक, full stop. Similarly, a set is a G delta set if and only if
its complement is an F sigma set. तो अगर आपके पास F sigma set है, the moment you take its complement, it becomes a G delta set. और अगर ऐसा हो रहा है, अगर complement लेने से ये G delta बन रहा है, then it must be a F sigma set because this is if and only if here. And similarly, if you have a set which is a G delta set, the moment you take its complement, it becomes an F sigma set. And converse is also true because यहाँ if and only. ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, ये आप इजीली कर सकते हैं. Can you give me an example of an of a of an F sigma set in R? Yes, sir. Q is F sigma set of R. Exactly. अगर और आप क्लोज्ड इंटरवल वो भी है. नहीं, कोई sorry, कोई भी क्लोज्ड इंटरवल सर. okay. Can we say that every closure set is an F sigma set? क्या ऐसा कहना सही होगा? अब ये देखिए, suppose A is closed in a metric space XD. इसके बाद आप क्या करिए, let Fn be equal to A, और मान लीजिए this is true for n equal to 1, 2, so then this Fn n running from 1 to infinity, because each A Fn is equal to A. Okay, Fn is A and this is true for n equal to 1, 2, so on. So that means each Fn is equal to A. A is closed, so that means each Fn is closed. So therefore this is a sequence of closed sets. Full stop. Therefore अगर आप इसे देखेंगे, union n running from 1 to infinity Fn, this must be an F sigma set. But if I ask you what is this union, therefore this पहले आप लिखिए is an F sigma set because this is a countable union of closed sets. ठीक. Now if I ask you what is this union, so this will be union n running from 1 to infinity, sorry, इसको खोल के लिखेंगे, this will be F1 union F2 union F3 union so on. But each Fn is equal to A, so it will be A union A union A union A. So A union with itself infinitely many times, which is A. So this is nothing but A. So that means A is an F sigma set. ठीक? So that means every closed set is an F sigma set. But the converse is not true because there are F sigma sets which are not closed. और इसी की एक एग्जांपल है Q. अगर आप इसे देखेंगे इस मेट्रिक स्पेस को, it's an example. अगर आप इसे कंसिडर करेंगे, कंसिडर R with the usual metric, in this metric space अगर आप देखेंगे,
कोई भी सिंगलटन सेट आप लीजिए, एवरी सिंगलटन, इट्स क्लोज्ड। कोई भी सिंगलटन सेट आप लीजिए, इट इज क्लोज्ड। अभी कैसे देखेंगे आप? लेट्स टेक अ सिंगलटन सेट, से दिस सिंगलटन एक्स। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इट्स क्लोज्ड। इसको सिंपली देखने का तरीका है, आप कॉम्प्लीमेंट लीजिए इसका। व्हाट विल बी एक्स कॉम्प्लीमेंट? सिंगलटन एक्स कॉम्प्लीमेंट। सो इट X विल बी एक्चुअली, हाँ क्या R होगा? minus X. r minus x. So it will be the real line, all the real numbers except the point x. So this will be actually, आपको इस रियल लाइन से, अगर यहाँ x है, आपको सिंपली इस x को उठाना है वहां से। अब इस जो बाकी रहता है वहां पर, उसको कैसे आप कैप्चर कर सकते हैं? यू कैन कैप्चर दिस एज open interval minus infinity x, open at x, union open interval x infinity. This portion is, ये जो यहाँ से आप जो लेफ्ट साइड से ये जो रह रहा है ना, ये वाली से, जैसे आपने x उठाया वहां से, वहां एक होल हो गया, अब ये डिस्कनेक्टेड बन गया। अब ये वाला जो पीस है ना, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू x, ओपन एट x। और ये वाला जो पीस है, दिस इज x टू इन्फिनिटी। और इनका जो यूनियन है, इट विल बी r माइनस x। ठीक, सो r माइनस x इज दिस। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज ओपन बिकॉज इट्स एन ओपन इंटरवल, दिस इज ओपन, so therefore this is a union of open sets. Union of open sets is open, so therefore the complement of this is open, so it must be closed. So singleton sets are closed. So every singleton set is a closed set. Full stop. Since the q है is, it's countable, we know that, the set of rational numbers. Q is countable. It follows that we can write, since ये countable है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, you can enumerate its elements as a list. So you can write this Q in this way: Q R1, R2, R3, so ये खाली privilege आपको countable sets में हासिल होती है। अब since Q is countable, तो आप यहाँ ये कर सकते हैं। और अब ये जो है ना, this set, ये R1, R2, R3, I can write this in this way. I can write this as singleton R1 union singleton R2 union singleton R3 union, so on। ठीक, और compactly मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ: union n runs from 1 to infinity singleton Rn। Now what is this? It's a countable union, है ना? Union n runs from 1 to infinity, it's a countable union। A countable union of what? Singleton Closed sets. sets, and singleton sets are closed, so that means Q can be written as a countable union of closed sets, so therefore Q is an F sigma set, hence Q is an F sigma set। Consequently, अगर आप इसका complement लेंगे, Q complement, what will be this? Not an F sigma set. Q complement will be a G delta set, because मैंने आपको दिखाया ना, complement of an F sigma set is a G delta set। Yes, sir. That means the set of irrational numbers is a G delta set in R with the usual metric। But it doesn't mean ना, आप डायरेक्टली नहीं कह सकते Q complement is not an F sigma set। हालांकि ये नहीं है F sigma set, बट आप यहाँ आप डायरेक्टली भी नहीं कह सकते, इतना आसान भी नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे देखेंगे, कंसिडर दिस, अगेन आप कंसिडर करिए आर विद द यूजुअल मेट्रिक. टेक अनदर एग्जाम्पल. Consider the metric space R with the usual metric, और फिर आप क्या करिए, इसमें आप एक सेट लीजिए A, और मान लीजिए दिस A is equal closure interval say 4 to 10. ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया एवरी क्लोजर सेट इज अ एफ सिग्मा सेट, है ना, दिखाया ना अभी ऊपर. मैंने एक ए लिया था विच वाज क्लोजर, और फिर मैंने आपको दिखाया इट्स एफ सिग्मा आल्सो. So every closure set is an F sigma set, but the converse is not true. Similarly, every open set is a G delta set, but the converse is not true. Not every G delta is open, but every open is G delta. ये याद रखिएगा. वो भी आप ऑलमोस्ट ना ऐसे ही दिखा सकते हैं जैसे यहाँ हमने दिखाया कि every closure is F sigma. Now since ये A जो मैं यहाँ ले रहा हूँ, it's a closed interval, so therefore it's closed in this metric space. So therefore it is an F sigma set. So this is an F sigma set. ठीक. अब आप क्या करिए, आप ये देखिए, अगर आप इसे देखेंगे, मैं पहले यहाँ कुछ एक चीज लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा एट द एंड ये क्या होगा. इंटरसेक्शन n runs from 1 to infinity. ठीक है, ओपन इंटरवल 4 minus 1 by n up to 10 plus 1 by n. Four minus 1 by n up to 10 plus 1 by n. But this n, it runs from 1 to infinity, and then you have to take the intersection. सर ये जी डेल्टा सेट होगा. नहीं, मुझे बताइए ना एट द इवेंचुअली क्या आएगा, ये कौन सा सेट किसके बराबर आएगा ये इंटरसेक्शन. मैं कह रहा हूं आपसे कि दिस इज प्रिसाइजली द क्लोज्ड इंटरवल 410. Yes, Yes, sir. sir. It is closer 410 It will interval. be precisely closed 410 because अगर कोई पॉइंट इस इंटरसेक्शन में आ रहा है ना, then the point necessarily has to be greater or equal to 4 and less than or equal to 10. एंड कन्वर्सली अगर कोई पॉइंट इस क्लोजर इंटरवल में है तो नेसेसरीली वो इस इंटरसेक्शन में भी होना चाहिए. वो तो आसान है. सो दिस इंटरसेक्शन इज प्रिसाइजली दिस क्लोजर इंटरवल. अब अगर आप यहाँ इस तरह इसकी ये वाली फॉर्मुलेशन देखेंगे, यहाँ से आपको पता चलता है कि इट्स जी डेल्टा आल्सो. सो दैट मीन्स दिस सेट ये एफ सिग्मा भी है और जी डेल्टा भी है. सो दैट मीन्स इफ ए सेट इज एफ सिग्मा सेट, इट डज नॉट मीन कि इट कैन नॉट बी जी डेल्टा. ये जी डेल्टा भी हो सकता है. मतलब a set can be f sigma as well as g delta. जैसे ये है, it's both f sigma as well as g delta. अब आपने देखा यहाँ कि जो q complement है, it is g delta. It's a g delta set. That means a set of irrationals. It's a g delta set. और ये जो मैं यहाँ एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इसे आपको समझना है कि आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि दैट दिस q complement it cannot be f sigma, because it is very much possible that a set is both f sigma as well as g delta.
सर हाँ, सर इसका मतलब है तो हम किसी भी क्लोज्ड इंटरवल को इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स में लिख सकते हैं सर। ये आप हमेशा कर सकते हैं। हाँ, अगर सर इंटरवल हम लेंगे क्लोज्ड इंटरवल 1/2, 1, सॉरी, सर अगर हम क्लोज्ड लेंगे इंटरवल। 1/2, जी सर 1/2, 1, एक मिनट, हाँ, जी सर इसको हम कैसे लिख सकते हो एज इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स? आप लिखिए इसको इंटरसेक्शन। मुझे समझ आ रहा है, समझ आप एक्चुअली क्या कह रहे हो। अगर आप, वैसे इसमें भी क्या मसला हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम होगी इसमें अगर आप, कुछ पॉइंट्स बाहर जाते हैं सर। मुझे नहीं लग रहा है। अगर आप करेंगे 1/2 -1/n and 1 plus 1/n and then you take the intersection from n running from 1 to infinity, कौन सा पॉइंट बाहर जा रहा है? जो पहला सेट होगा इस इंटरसेक्शन का, इट विल बी करस्पॉन्डिंग टू n equal to 1, और वो क्या होगा? 1/2 -1 -1/2 up to तो 2 2, उसके बाद 0 0 0 up to 3/2 3/2 इंटरसेक्शन। सो कहाँ कौन सा पॉइंट बाहर जा रहा है? आपका जो सेट है जिसको आप कैप्चर करना चाहते हैं वो है, सपोज दिस इज 0, दिस इज 1। आपका जो सेट है जिसको आप कैप्चर करना चाहते हैं वो ये है 1/2 अप टू 1। पहला जो सेट आपको इस इंटरसेक्शन में मिल रहा है, इट इज -1/2 अप टू 2। सपोज दिस इज -1, और यहाँ मान लीजिए दिस इज -1/2, और ये मान लीजिए दिस इज 2। तो पहला सेट है वो ये है, और उसके बाद आपको मिल रहा है 0 अप टू 3/2। सपोज दिस इज हियर 3/2। दूसरा सेट आपका ये है, और कंटिन्यूअसली आप इनको श्रिंक कर रहे हैं, एंड देन यू टेक द इंटरसेक्शन, यू विल गेट दिस 1/2 1। आप ये हमेशा कर सकते हैं। अब जो मैं यहाँ आपसे कह रहा था वो तो बात वही की वही रह गई। हमने देखा Q complement is a G delta set, but it does not mean कि it cannot be an F sigma set. Why? Because we have an example where a set is both G delta as well as F sigma. जैसे ये A, it is G delta as well as F sigma. तो यहाँ भी chances है ना कि this Q complement, it can be F sigma, but the thing is it cannot be. और ये हम प्रूव करेंगे, इसको एज अ थियरम आप लिखिए। पर it directly follow नहीं होगा, it follows by the Baires theorem. The set of irrationals in the metric space R with the usual metric is not an F sigma set. ये F sigma set नहीं हो सकता। Proof. हम पहले क्या करेंगे, we'll assign a symbol to this set of irrationals. Let U be the, और हालांकि मुझे लिखना चाहिए था Q complement, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको लिखना थोड़ा सा tedious बन जाता है, बट यहाँ कंफ्यूजन है। तो चलिए लेट्स राइट Q complement, हम इनकन्वीनियंस से बर्दाश्त करेंगे। लेट Q complement, मुझे लेट लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी फिर एक मसला है। आई डोंट नीड, फिर ऐसे लिख के प्रूफ इस तरह से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट
Q जो है is an, ये हमने देखा अभी, it's an F sigma set and therefore Q complement, therefore the set of irrationals which is Q complement, it will be a G delta set. Therefore set of irrationals this Q complement is a G delta set. Now it's a G delta set, so therefore by definition, hence by the definition of a G delta set, it follows, since आप कह रहे हैं कि Q complement is a G delta set, so therefore it must be a countable intersection of open sets. It follows this Q complement is equal union and running from 1 to infinity. It must be a countable intersection of open sets. So I'm supposing this. It follows Q complement must be equal intersection n runs from 1 to infinity O sub n, comma, where O sub n's are open. यही तो होगा ना, अगर ये G delta है तो necessarily ये होना चाहिए. It must be, you must be able to write this like this. अब यहाँ आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि Q complement is equal to the intersection. When I say Q complement is equal to the intersection, means Q complement is then a part of each set appearing in this intersection, because it's equal to their intersection. So it must be a part of each set appearing in the intersection. तो मैं यही लिखने जा रहा हूँ. Since अब एक और चीज जो मुझे यहाँ पता है, I know that this Q complement, the set of irrationals, it's dense in R. Since Q complement is dense in Q complement is dense in R and since Q complement is contained in On and this is true that it cannot be equal to On, so it's properly contained in On's. So Q complement is contained in On and this is true for n equal to 1, 2, so on, comma, it follows. मैंने आपको कहा ये, in fact ये it's an easy exercise to show that a superset of a dense set is again a dense set. So that means now since ONs they contain Q complement is dense in R, so that means each ON is dense in R. So in addition to being open, these ONs are also dense. So therefore they are open and dense. It follows ONs are open and dense in R. So they are open and dense in R. ONs, ठीक है. Now if possible, मुझे दिखाना है आपको कि Q complement जो है ना, मुझे दिखाना है कि it is not an F sigma set.
ठीक, तो we'll assume to the contrary. If possible, suppose Q complement is an F sigma set, तो फिर क्या होगा, then you must be able to write Q complement as a countable union of closed sets. So you must be able to do this. Must be able to write Q complement as union n running from 1 to infinity Fn, where Fn's are closed. Full stop. Therefore, now if this be the case, if Q complement is this, what will be Q? Q will be Q complement whole complement, which means it will be union n running from 1 to infinity, because Q complement is union n running from 1 to infinity Fn and then complement. So this will be Q. And what is this? By De Morgan's law, this is intersection n running from 1 to infinity Fn complement. Now what is this? It's a countable intersection. Countable intersection of what? Fn Open complements. sets. Fn's are closed, so this is these Fn complements are open. So this is a countable intersection of open sets. So therefore it's a G delta set. This Q is a G delta set. हालांकि मुझे G delta ने से भी ऐसे डायरेक्टली नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए यहाँ पर, वही मैं आप लिखने जा रहा हूँ. Therefore Q will be equal to this. Full stop. और since आप यहाँ देख रहे हैं कि Q is equal to the intersection, so that means Q is a part of each of these Fn complements. ठीक, तो मैं वही लिख रहा हूँ. Since Q is contained in Fn complement, and this is true because it's equal to their intersection. This is true for all n's equal to 1, 2, 3, so on. It follows Fn complement जो है ना, follows Fn complements are, एक तो ये open होंगे, क्यों? Because Fn's are closed, so their complements will be open. और इनमें एक और चीज होगी, they'll be dense also. बताइए क्यों? The reason is this, because they are supersets of Q. Fn complement, it contains Q. Q is dense. A superset of a dense set is dense, so Fn complements are dense. So they are open and dense. Since R with the usual metric, it's a complete space, so therefore it's a Baires space. Since this, it's a Baires space, और Baires spaces में मैंने आपको दिखाया है, if you take a countable intersection of open and dense sets, you again get a dense set. तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ. Since this is a Baires space, why it's a Baires space? Because it's a complete space, and every complete space is a Baires space. R with usual metric is a complete space, so therefore it's a Baires space. और फिर as a consequence of this, that it's a Baires space, ये होगा. So Baires space comma, it follows intersection n running from 1 to infinity On, then intersected with intersection n running from 1 to infinity Fn complement. अगर आप इसे देखेंगे, this is a countable intersection. इस पूरे को देखिए आप, इसको देखिए as a whole.
दिस इज अ काउंटेबल इंटरसेक्शन बिकॉज यहाँ आपको काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स मिल रहा है, यहाँ भी काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स. सो ओवरऑल दिस इज अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स. मतलब ना ये जो सेट्स यहाँ इन्वॉल्व है ना, ओ एन्स एंड एफ एन्स, देयर कलेक्शन इज अ काउंटेबल कलेक्शन. And the operation you are using is intersection, so therefore it's a countable intersection. Now countable intersection of what? It's a countable intersection of ONs and FN complements. What are ONs? ONs are open and dense. यहाँ लिखा है, वो हमने establish किया है that ONs are open and dense. इसी तरह से जो ये FN complements हैं उनके बारे में भी हमने अभी देखा that they are also open and dense. So therefore this is actually a countable intersection of open and dense sets. और हमें पता है कि बियर स्पेसेस में ये dense आता है. ठीक. So it follows this is, मैं पहले ये लिख ले जा रहा हूँ, it follows this is dense in R with the usual method. ठीक है. Because this is a countable intersection. ये पूरा जो है ना, this is a countable intersection of open and dense sets. और आप एक बियर स्पेस में है, so this intersection must be a dense set. But अगर आप इस intersection को देखेंगे, what is this intersection? What is this intersection of ONs? Intersection of ONs is Q complement. And what about intersection of FN complements? Intersection of FN complements is Q. So intersection of ONs and intersection of, मतलब ये intersection of ONs intersected with intersection of FNs. This will be actually Q complement intersected with Q. So this is nothing but Q complement intersected with Q, and which is phi. That means आप कह रहे हैं कि this empty set it's dense in this, which is clearly a contradiction. In fact, it's absurd. ये नहीं हो सकता. Full stop. Which is absurd. अब ये absurdity आपको क्यों आई यहाँ पर? इसका रीजन ये है, आपने एक गलत चीज अज्यूम करी थी. आपने अज्यूम किया था Q complement is an F sigma set. So Q complement is not an F sigma set. Hence, Q complement is not an F sigma set. आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे स्टार्ट हो रही है? इसके बाद कितने बजे क्लास होगी आपकी? यही आप मैम अभी टाइम नहीं बताया. ठीक है. ये सो मैं आपको दिखा रहा हूँ दैट जो सेट ऑफ इरेशनल्स है, इट्स नॉट एन एफ सिग्मा सेट, एंड इट्स एक्चुअली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट R with the usual metric is a Baire space. That is the reason. It's actually because of this. It's because of the fact that R with the usual metric is a Baire space. ये हो रहा है कि that the set of irrationals in this metric space is not an F sigma set. अभी F sigma sets इतने important क्यों है? मतलब इसकी एक illustration मैं आपको यहाँ ना अभी दे सकता हूँ. हालांकि ये पूरी तरह से मुझे नहीं लगता कि मैं इसको कर पाऊंगा, बिकॉज इसके लिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए. लेकिन सडनली मैं आपको ये कह सकता हूँ, एटलीस्ट आपके ये जहन में रहेगा, एंड देन विल ना एस्टैब्लिश दिस, विल सी दिस, मैं आपको एक प्रूफ भी इसका प्रोवाइड करूंगा फिर उसके बाद. क्योंकि आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली लिखा है एप्लीकेशंस ऑफ बेयर्स कैटेगरी थ्योरम, और इसकी एक एप्लीकेशन ये भी है. इनफैक्ट ये भी एक एप्लीकेशन है ना, इस फैक्ट को एस्टैब्लिश करना कि दैट the set of irrationals is not an F sigma set.
अब जो जिस रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना वो ये है, इसको आप एज अ थियरम रिकॉर्ड करिए एंड इसके बाद मैं आपको इसका प्रूफ भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन वो आज नहीं होगा बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। इसमें के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट को पहले डिफाइन करना है जिसको हम कहते हैं ऑसिलेशन फंक्शन, तब जाके आप ये प्रूव कर सकते हैं इस थियरम को। फिलहाल आप इसको ना स्टेटमेंट आपके जहन में रहेगा तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ these f sigma sets. Let xd be a metric space. ये कोई abstract metric space है, ठीक है, and let f from x into r. When I say r, I mean r with the usual metric actually. या आप इसको मोर प्रिसाइजली ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखिए आपको बेहतर वही होगा। लेट f from metric space xd into the metric space r with the usual metric be a function, full stop. Then एक रिमार्केबल चीज होती है, then the set of all the points of discontinuity then the set of all the points of discontinuity of f of this function f, it's an f sigma set. That means अगर आप इस तरह की सिनेरियो में है where you have an abstract metric space xd and a function which takes xd into this r with the usual metric. Actually when I say r with the usual metric I mean that f is a function from x into r, और जो metrics हम use कर रहे हैं वो इस तरह से है, d will be the metric in x and the metric in r will be the usual metric. ये है मेरी अंडरस्टैंडिंग जब मैं इस चीज को लिखता हूँ। अब ये थियरम हमें गारंटी देती है कि जो इस f की जो इसकी जो डिसकंटिन्यूटीज होंगी अगर आप उनको कलेक्ट करेंगे in the form of a set, the set is going to be an f sigma set. ठीक है, it's an f sigma set, full stop. अब ये भी हमें पता है कि complement of an f sigma set is a g delta set. So therefore the complement of the set of discontinuities will be a g delta set. But what will be the complement of set of discontinuities? It will be the set of continuities. Actually it will be the set of continuity जहां पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। Consequently, because if the set of discontinuities of this function is an f sigma set, then its complement must be a g delta set. But the complement of set of discontinuities is actually this set of points of continuity. So the set of points of continuity is a g delta set. Consequently, मैं इसी की चीज को लिख रहा हूँ। Consequently, the set of points of continuity of f is a g delta set. ठीक, और अब ये जो थियरम है इसकी एक इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस है, उसको हम एज अ क्रॉलरी नोट करेंगे, और वो क्रॉलरी ये है।
there is no function f from R into R, ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है which is continuous at rationals and discontinuous at irrationals. आप बता सकते हैं ये कैसे फॉलो होता है? अगर ऐसा कोई फंक्शन होगा from R to R which is continuous at rationals and discontinuous at irrationals, अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन का जो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा ना, वो क्या होगा? व्हाट विल बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दैट फंक्शन? मैं आपको यही से कह रहा हूँ, इट इज कंटिन्यूअस एट रैशनल्स एंड डिसकंटिन्यूअस एट इरैशनल्स. सो व्हाट विल बी द set of points of discontinuity of that function? F sigma. क्या होगा? F sigma. अरे यहाँ देखिए ना पहले इसको, हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं, मगर ये इसमें से मुझे पहले बताइए. मैं आपसे कह रहा हूँ फंक्शन, अगर ऐसा कोई फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस एट रैशनल्स एंड डिसकंटिन्यूअस एट इरैशनल्स, तो फिर जो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा उस फंक्शन का, इट मस्ट बी इरैशनल्स. ठीक, so set of points of discontinuity must be irrationals for that function. अगर ऐसा कोई function है ना, then for that function the set of points of discontinuity is the set of irrationals, and therefore by the above theorem it must be an F sigma set. Because यहाँ मैं आपको वही कह रहा हूँ कि F sigma set नहीं है. but we know that it's not an F sigma set, so that means there is no such function. ऐसा कोई function ही नहीं हो सकता which is Yes, sir. continuous at rationals and which is discontinuous at irrationals. ठीक, अब यहाँ हम थोड़ी चीज है ना थोड़ी सी परम्यूट करेंगे. Now instead of asking continuity at rationals and discontinuity at irrationals, अगर आप उल्टा डिमांड करेंगे, if we demand continuity at irrationals and discontinuity at rationals, क्या लग रहा है आपको, क्या ऐसा कोई फंक्शन होगा? ये मैं आपके लिए क्वेश्चन पोज कर रहा हूँ. Is there a function f from R into R? मतलब इस चीज का उल्ट, यहाँ तो हमें पता है कि इसमें तो पूरा पता है, देयर इज नो फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एट रैशनल्स एंड डिसकंटिन्यूअस एट इरैशनल्स. ऐसा कोई फंक्शन नहीं है. Now अब इस क्वेश्चन पर आइए आप. इज देयर अ फंक्शन f from R to R which is continuous at irrationals and discontinuous at rationals. rationals पर discontinuous है और irrationals पर continuous है. इट्स अ क्वेश्चन. क्या लग रहा है आपको, होगा कोई ऐसा फंक्शन? The remarkable thing is that we can create such a function. हम एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं which is in fact it's a well known function. It's known as the Thomis function. और इसमें प्रॉपर्टी ये है कि it's continuous at irrationals and discontinuous at rationals. तो इस क्वेश्चन का आंसर है yes. लेकिन द मोमेंट अगर आप यहाँ ये वाली चीज को, ये जो डिमांड्स है आपकी, अगर आप उनको थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे, मतलब इफ यू इंस्टेड ऑफ आस्किंग कंटिन्यूटी एट
irrationals, if you ask for continuity at rationals and discontinuity at irrationals, then वो possible नहीं है. ये possible है, ये possible नहीं है. Green वाला possible नहीं है. There is no such function which is continuous at rationals and discontinuous at irrationals. But there is a function which is continuous at irrationals and discontinuous at rationals. एक ऐसा function है. And the function is actually the Thomas function. अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू विल फर्स्ट प्रूव दिस थ्योरम. जो थ्योरम है ना हम पहले से प्रूव करेंगे और उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट पहले डिफाइन कर रहा है दैट इज नोन एज द ऑसिलेशन फंक्शन. और उसके बाद ही ये होगा तब जाके आप इसको कर सकते हैं. मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है. या अगर आप और रुक सकते हैं तो मैं ये ऑसिलेशन फंक्शन भी अभी या फिर एटलीस्ट डेफिनेशन आपको दे सकता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड है. अगर नहीं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. हाँ इट मीन्स आप इंटरेस्टेड नहीं है. अदरवाइज आपने कहा होता. ठीक है चलिए कोई नहीं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू सर. चलिए खुदा हाफिज़. सर एक डाउट है सर.